अहमद भाई यहाँ पे, सर लेफ्ट कॉर्नर सर, दूसरा सेंटर सेंटर, अहमद भाई सेंटर, सर लेफ्ट सर सामने सर, आपके सामने सर लेफ्ट सर लेफ्ट कॉर्नर सर आपके सामने सर सामने। आइए लेट्स हैव all three of us. Can you been my photo? क्या करते हैं ढोल क्या अरे नहीं तेरे बीच में हम ढोल क्या सेंटर लुक ऑल ऑफ यू राइट राइट एकदम सामने ऑल ऑफ यू सेंटर सेंटर। वेट सामने देखिए She's part of the song. She's part of the song. She's there in the song. But she's picking up. कितने पाजी इस तरफ, ये हट जाओ ना यार, अरे अगेंस्ट लाइन आ रहा है, पीछे आ ना दीपरा पाजी बाजी 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 फोटो करते रहे Congratulations for everything. But you're now my friend. दादा के तरफ से आम्हाला आता अगेंस्ट Please take your seats. वक्त मिलेगा फोटो वीडियो के लिए please take your seats. Access to this. All telecom networks will have access to this. And some of the earlier creations of Shan and Swanand and almost about 50 wonderful people from the world of film, cinema, music who've been associated, over the years, we've been able to take that message across. And some of these have become anthems because किसी ने सही कहा है that, we don't inherit planet Earth from our ancestors. All we have done is we are taking care of it for our children. So it's with that little approach, we are really always proud to be associated with this, and it's because of this wonderful, charming young man who's been taking the lead. So thank you, Asif Bhai, and wonderful to be associated with you. And we'd request Mr. Asif to also speak a few words. Ladies and gentlemen, he's an environmentalist, philanthropist, a politician, and most importantly, an environmental lover. So, Batai, tell us why was this idea of getting music along with Environment Day come together? You see, what happens is normally ज्ञान से हिदायत से और ये तमाम बातों से लोग थक गए, परेशान हैं, बदजन हैं. सो संगीत के माध्यम से जो हम बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका इफ़ेक्ट is very far-fetched. If you see, when we started off the first campaign on plastic pollution, we were not involved with the Ministry of Environment. But, when we just loaded this campaign, of course, thanks to Hangama, who propagated this whole thing. So we got a call from the Ministry of Environment कि ये गाना बहुत बढ़िया बना है और इस बार 5 जून को जब हिंदुस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का ग्लोबल होस्ट था और प्रधानमंत्री जी अनावरण करने थे, तो उनकी तरफ से ये आया कि भाई ये गाना इतना बढ़िया है कि इतने सीरियस सेट ऑफ डिस्कशन में एट द विज्ञान भवन इन द कैपिटल इन दिल्ली हम ये गाना चलाएंगे. So that shows the seriousness of music, the reach of music. I mean, we never knew. हमने तो तस्वुर भी नहीं किया कि देश के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें एक इतना बड़ा मौका मिलेगा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी के रहते ये अनावरण होगा. तो this shows the importance of environment. और ये बढ़ते ही जा रहा है वहाँ से. अगर आप देखो तो हम जब शुरू किए ये सिलसिला 15 साल पहले, तब इतना डिजिटल मीडिया ये सारा सब कुछ था नहीं. तो जब हमने कार्टर रोड पे 5 जून को हमारा होता है अमूमन जो फंक्शन, तो जब हमने शुरू किया था तो 200-300 लोग आए थे. एंड आप किसकी बात कर रहे हो? पर्यावरण की. एंड व्हाट इज ऑल दिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंज्यूम लेस, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये सब क्या आप लोग बोल रहे हैं? और आज ये गौरव की बात है कि पूर्ण विश्व में यदि एक कॉमन चीज़ है या एक कॉमन विषय है, चाहे आपने COP26 का जो जिक्र किया या अन्य अभी भी जो वर्ल्ड फेडरेशंस में जो एक यूनिवर्सल इशू है, तो दैट इज ओनली एनवायरनमेंट. एंड वी आर proud to see that the significance of this is so much that even from the Red Fort, the Honorable Prime Minister speaks
only of environment. So that talks volumes about it, you know. That's wonderful. That's absolutely wonderful. दोस्तों इस प्रयास के लिए एक बार जोरदार तालियां दिल से तहे दिल से दीजिए please. While this composition has been created by the wonderful Shan, unfortunately, he wasn't able to attend our event today, but he's very graciously sent us a video message, and we'd like to just watch it, please. Very good evening, my dear friends, fraternity, and members of the media. Sabse pehle, I would like to wholeheartedly apologize for not being present among you this lovely evening. Dil to bahut tha कि मैं आपके बीच आपके समक्ष आऊँ क्योंकि इस प्रोजेक्ट से इस मुद्दे से और ऑफ कोर्स भामला फाउंडेशन से मेरा ख़ास रिश्ता रहा है कई सालों से but I'd like to take this opportunity to thank all of you, especially the members of the press and media, to attend this press conference and support the cause of only one earth. हमने यानी humans across the world कई युगों से इस धरती माँ को taken for granted ले रखे हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं कि इसके सिवा हमारे पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है. We only have only one earth. तो कब तक हम इस गलतफहमी में जाएंगे कि बस अपना घर, अपना शहर या फिर अपना देश सुरक्षित हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बाकी जिसका जो है वो अपना देख ले, हम तो सेट हैं. तो ये जो सोच है इसे बदलनी होगी. हम सबको एक होकर एक ही सोच और मनोवृत्ति के साथ आगे बढ़ना है कि there's only one earth, there's nowhere else to go. We have to take care of this earth. You know, thanks to our greed, our selfishness, in the name of progress, in the name of ambition, we have almost brought it to the brink of destruction, brink of extinction. But if we don't come together now and act fast as individuals and as well as nations, it is literally game over. तो इस विषय पर हमने एक गाना भी बनाया है. आशा है कि आपको ये गाना पसंद आएगी. इट्स written by स्वानंद किरकिरे और मेरी धुन है और हम सब ने मिलके इस गाने को गाया है. Only one earth, तेरी मेरी इसकी उसकी ये ज़मीं है सबकी. Only one earth, पेड़ पौधे जंगलों की मिट्टी की फलक की. Only one earth. तो इस तरह का गाना है कि रोक लो सितम ये साये ये ज़मीं बिलखती. Only one earth, earth. तो गाना काफ़ी अप टेम्पो है लेकिन वर्ड्स इसके काफ़ी दिलों को झकझोरने वाली वर्ड्स हैं. तो आप इस गाने को भी एंजॉय कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस एंजॉय कीजिए, मुझे मिस कीजिए और मैं बहुत जल्द आपको मिलूंगा on the 5th of June when we'll celebrate World Environment Day together. Thank you guys. See you soon. That was lovely. As always, the wonderful Shan. And इसी के साथ हमारे esteemed guest जो यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहूँगी प्लीज़ मेरा साथ दीजिए. Please put your hands together while I welcome on stage B Praak. Please put your hands together for B Praak. Ahmed Khan Sahab. All right, Swanand Kirkire ji, of course. Tulsi Kumar. Warda Nadiadwala. Please join us on stage. Please join us on stage. थैंक यू सो मच आप सभी का. बी प्राक जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं और मैं आज यहाँ पे आया हूँ और नीरज आसिफ भाई से जुड़े मुझे तकरीबन हमें 2-3 साल हो गए हैं. हम 2020 में जुड़े थे साथ में जब कोविड आया था उस टाइम नया और आसिफ भाई ने बोला कि हम ये कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगा. और अब आसिफ भाई सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं हैं, मेरी फैमिली है और इतना साथ देते हैं मेरा और जहाँ बोलते हैं हम आ जाते हैं बिकॉज हमारा प्यार अब इतना ज़्यादा हो गया इनसे और ये इतना अच्छा काम करते हैं. जब भी मुझे बोलते हैं कि ये कर रहे हैं, मैं चाहे वो लेट कर देता हूँ बट मैं कर ज़रूर देता हूँ. बट ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा है कि हमें अपने इस देश को इन चीज़ों से बचाना है जो आजकल चल रही हैं. सो हम इस चीज़ों को एक बातों के ज़रिए नहीं बट अच्छे गाने के ज़रिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है और पिछले गाने को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला है.
और आई एम श्योर कि ओनली वन अर्थ को भी उतना ही ज़्यादा क्या प्यार बात है, मिले। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, दैट वाज वंडरफुल। मैं खास तौर से स्वानंद जी आपसे पूछना चाहूँगी, एक बार फिर से आपके शब्दों ने 4 चांद लगा दिए हैं एंड वी आर ऑल बिग फैंस ऑफ स्वानंद जी। यस, कैन आई हियर अ यस एवरीवन? व्हाट अ मैन। तो हर तरीके के गाने आप लिखते हैं, फ्रॉम इमोशंस टू लव, लेकिन अर्थ पर गाना लिखना, धरती माँ के लिए गाना लिखना कैसा रहा आपके नहीं, लिए? बहुत जैसे जैसे नीरज ने कहा कि ये कोई सिर्फ गाना नहीं है, ये एक्शन का कॉल है। ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको सुन के अच्छा महसूस करें और घर चले जाए। ये सच में इस गाने में जो कहा गया है वो इतना अर्जेंट है कि एक ही है मौका इसको बचाना है, और अगर हम इस वक्त एक साथ नहीं आए और हमने इसके साथ काम करना नहीं शुरू किया तो बहुत मुश्किल होने वाली है। और हर साल हम लोग ये काम कर रहा हूँ, मैं आसिफ भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ, नीरज सर और शान, हम लोग कम से कम 5 साल से गाने बना रहे हैं, हर बार एक नया सब्जेक्ट लेके बनाते हैं। एंड मैंने इसकी पावर देखी है कि एक गाने के थ्रू जब बात जाती है तो कितना उसका इम्पैक्ट होता है। जैसे हमारा गाना था टिक टिक प्लास्टिक, वो मेरे ख्याल से मतलब कोई लोग आपको किन गानों की वजह से जानते हैं, लेकिन बच्चे आपको टिक टिक प्लास्टिक की वजह से जानते हैं। आपको बाकी दुनिया भले ही आपके फिल्मी गानों की वजह से जानती है कि जो आपने ये गाने लिखे वो गाने लिखे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे आपको कहते हैं कि आपने टिक टिक प्लास्टिक लिखा है, क्योंकि उनके स्कूलों में वो गाना उनको सुनाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। और मुझे लगता है उन छोटे छोटे बच्चों के मन पे जो इम्पैक्ट होता है इसका, तो वही आने वाली जनरेशन है जो इसको बदलेंगी। और मैं हमेशा की तरह हमें थैंक यू कहना चाहता हूँ आसिफ भाई को, आसिफ भामला सर को, नीरज सर को, और सभी लोगों को जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा एक बात ऐसी हो जिससे थोड़ा सा सही इम्पैक्ट हो हमारे कहने का, हमारी बातों का। थैंक यू सो मच। दैट इज वंडरफुल, क्या बात है। स्वानंद जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। Ahmed sir, would you like to say something please? We'd love for you to also give us your tips about this. कैसा लगा आपके लिए इसके साथ जुड़ना, इस स्पेशल कैंपेन के साथ? Well, I felt privileged because बहुत कम लोग को ये मौका मिलता है कि आप एक फैमिली होती है, उसमें से एक सरपरस्त होता है, ओके, एंड कई बार ऐसा होता है कि उसके बाद क्या, हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस फैमिली। तो जिसे चुना जाता है ऐसा ही फील्स रिस्पॉन्सिबल। सो आज आसिफ भाई ने चुना है मुझे टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आसिफ भाई एंड बहुत खुशी महसूस हुई, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। इसको आप रिवर्स करो, अगर सागर में से बूंद बूंद निकालो तो सागर खाली हो सकता है। सो इट्स दैट डेंजरस। तो वी गॉट वन अर्थ, एक दुनिया है, और इसे मुसलसल मरम्मत की ज़रूरत है। इट नीड्स रिपेयर एवरी टाइम। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हील द वर्ल्ड एक बार हील हो गई, नहीं, हील करते रहो, वो डैमेज होता रहेगा। जैसे हमारा शरीर एक, बदन एक है, उसी तरह दुनिया एक है। अगर शरीर नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो शरीर नहीं। सो ट्रीट द वर्ल्ड लाइक योर ओन बॉडी, यू विल लव इट। क्या बात कही है। आई थिंक मोस्ट ऑफ us forget the fact that this healing is not just about us today, it's for the future generation as well, because what our future generation will experience depends totally on us. Thank you so much, Ahmed sir, for that. Tulsi, the lovely Tulsi, tell us, music and nature and environment coming together. बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है, और मेरा पहला साल है कि मैं इतने अच्छे कॉज के साथ जुड़ी हूँ। थैंक यू सर, नीरज सर फ्रॉम हंगामा भामला फाउंडेशन। इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। और म्यूज़िक जैसे कि कहते हैं सभी बैरियर्स तोड़ता है, तो म्यूज़िक के थ्रू हम लोग इस कॉज पे, जो कि एक अलार्मिंग कॉल ऑफ एक्शन जो हम सभी को लेना चाहिए एनवायरनमेंट के प्रति, तो उसका मैं हिस्सा बनी हूँ। और ओनली वन अर्थ, सभी ये बात कह चुके हैं, इट्स हाई टाइम वी शुड टेक द एक्शन, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि इस कॉज के साथ मैं इस साल जुड़ी हूँ और आगे भी जुड़ी रहूँगी, एंड वी होप वी कैन मेक अ डिफरेंस। Wonderful. Thank you, Tulsi. Thank you for those kind words. I'd like to also ask Warda to please say a few words. She's played a very important role in that. She's played a very important role. She was there for the unveiling in Dubai also for the same camp. I'm very grateful to आसिफ भाई, yes, कि इन्होंने मुझे इस कॉज के साथ जोड़े, एंड मैं सच्ची में पैशनेटली फील करती हूँ इसके बारे में।
एंड दुबई में हम थे सब, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी थे एंड उन्होंने, तो मैं इंसेप्शन से इसमें हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आसिफ भाई कि इन्होंने मुझे इसका हिस्सा बनाया। एंड गाने, यस वी गॉट सो या गाने यूनिवर्सल लैंग्वेज होते हैं, प्यार की लैंग्वेज होती है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने गानों के ज़रिए सबको जोड़ा है इसमें। एंड यस, लाइक एवरीवन सेड कि लास्ट टाइम ऑल्सो वी स्पोक दैट ये दुनिया हमारी जागीर नहीं है, ये हमारी अमानत है जो हमको हमारे बच्चों को देनी है, और सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। छोटी छोटी चीज़ों से पानी का ध्यान रखो, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करो, एनर्जी वेस्ट नहीं करो। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस, आसिफ भाई, ब्लेस यू, more power to us. Thank you so much, Warda, thank you. I would also like to mention here that we have got आज चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस था और we couldn't call all of them, but the other elements and other very big names associated with the cause like this. The campaign is opened and presented by the great Mr. Sachin Tendulkar ji, and it's got many other features also. It's got Tara Sutaria, it's got it's got Kapil Sharma, it's got Shilpa Shetty, and many other renowned singers also who are part of this whole campaign. And this campaign officially in Delhi will be released before the 5th. We've also requested the Honorable Prime Minister to share this beautiful campaign on behalf of the foundation, on behalf of Hangama, on behalf of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It will be unveiled in Delhi earlier, but on the 5th of June at the Carter Road, we have a massive function where we have requested the Environment Minister, a lot of Member of Parliaments, the entire film fraternity who will be coming to witness this beautiful unveiling of Only One Earth. So my media friends who are here, you will have to be there. We request you all to kindly come on the 5th of June, because पूरे कार्टर रोड पर आपको पता है हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत एक कार्यक्रम होता है, उसमें कई सारे परफॉर्मर्स भी हैं इस बार भी, और वो सारे मिला के और ये अनवीलिंग होगा उस दिन. सो आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस, ऑल माय मीडिया फ्रेंड्स, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस हियर, whoever is in the city will obviously be present. And thank you all, and I really thank Praak Paji. He's come all the way from Chandigarh, and he had so many, he's got another show lined up, but in spite of all of that, he's removed his precious time, and he's never said no to us. So I also thank Warda, I thank Tulsi. Ahmed is my childhood friend, so I am very thankful to you. Neeraj, I have no words to thank you. You've always supported. And a very big hand to Swanan Kirkire. A huge round of applause to Swanan Kirkire and to Shan. Swanan ji हमेशा जो है पर्दे के पीछे रहते हैं, और मतलब उनको बुलाओ भी तो बड़े शर्मीले से हैं कि आसिफ भाई यार आप लोग ही सब देख लीजिए ये सब, तो मैं उनको खींच के बुलाता हूँ. शायद थोड़ा सा मेरा पॉलिटिकल असर है इसलिए वो आ भी जाते, वरना तो आए भी नहीं, मुझे ये भी पता है. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. And I'd also like to mention Seher, who's been leading a lot from the Bamla Foundation along with Miraj, and my colleague Somini as well. Thank you. तो ऐसा है कि इतने बढ़िया आर्टिस्ट यहाँ मंच पर है, 2 लाइनें हम सुन ले लाइव एंड देन वील वॉच द वीडियो एज वेल. आसिफ जी क्या लगता है आपको, है ना? नहीं आप भी गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन ऑल बी पार्ट ऑफ दिस. क्या लगता है? Only one earth, तेरी मेरी इसकी उसकी ये ज़मीं है सबकी. Only one earth, पेड़ पौधे जंगलों की मिट्टी की फलक की. Only one earth, वो earth. अभी आप पूरा जो है आप वो ये गाना जो हम सभी की डेडिकेशन है मदर अर्थ को, वो आप सुनेंगे. इट्स एक्चुअली call to action. We have to take that action and we have to be responsible because we have only one earth. तो प्राक जी मेरे साथ on the count of 3 to 1 इस वीडियो को देख लेते हैं पहली बार आप सभी के लिए. क्या लगता है? Everyone ready? Yes? On the count of 3, 2 and 1. एक है ज़मीन, एक
है ज़मीं। ओ एक ही मौका इसको बचाना है, इस ज़मीं ने हमें जिंदगी है दी। हम सब सारे मिलके एक साथ हो, एक हो जाते हैं अभी। Only one earth, तेरी मेरी इसकी उसकी ये ज़मीं है सबकी। Only one earth, पेड़ पौधे जंगलों की मिट्टी की फलक। only one earth। Happy World Environment Day. Alright. ये एक छोटा स्निपेट था, बट इसका पूरा ये जो गाना है आप एंजॉय कर सकते हैं ऑन द हंगामा म्यूजिक प्लेटफॉर्म, लेडीज एंड जेंटलमैन. In fact, we have a lot of other artists who have been associated with this anthem, and we'd like to play their special message. Can we please have it? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल कुदरत ने कुछ ज्यादा ही कहर मचाया हुआ है. Every piece of plastic ever made still exists today. I think if it cannot be recycled, refurbished, or reused, we need to change. We need to put a stop on it. So let us put all our differences aside, come together and show everybody that we are the better generation by saving our planet while we still can. We have destroyed our planet's resources to the extent that our planet is at the brink of total destruction. I lend my wholehearted support to the Ministry of Environment, the United Nations Environment Program, and Bhamla Foundation on their initiative in spreading awareness about the consequences of environmental damage. So join me on this World Environment Day, 5th June, and let us save our beautiful planet. और हम सबका मकसद यही है कि धरती केवल एक है और उससे बचाने का जिम्मा हम सबके ऊपर है. I wish them all the best for this year's global campaign on sustainability. After all, we have only one Earth. #only one earth. धन्यवाद. धरती केवल एक है और उसे बचाने का जिम्मा हम पर है. I'd also request all the esteemed guests, I'd also request all the esteemed guests to please join me back on stage for the question and answer rounds. We've got our wonderful friends from the media, and can we have all the guests to please join us? Neeraj ji, Swanand ji, Tulsi, Praak sir, आइए please join us. वर्दा आइए. अहमद सर, आपकी तो ज़रूरत है. All right, ladies and gentlemen, the platform is open for any Q&A. Do we have any questions here? We stood exactly where we were. Like our names. Yes, Asif ji, we have a question from the audience. Hi. Am I audible? Hi, Asif sir, a question for you. This is Ria George from News Band. So now that we are here to celebrate only one Earth, there are some industrialists, examples for Musk, who are trying to make Earth outside Earth, that is Mars. So what do you have to say about it? Sorry, come back. So what I was saying is there are many industrialists like Musk, one of them, who is trying to make Earth out of Earth. For example, in Mars. Elon Musk you're talking about? Yeah. Yeah, okay. So what do you have to say about that? You see, industrialization and growth can't be stopped, you see. It's just that the ways of sustainability have to be adopted. अगर आप देखें सस्टेनेबिलिटी हर इंडस्ट्री में आ गई. आप देखो क्लोथिंग इंडस्ट्री में जो पोल्यूटेंट्स होता था, जो आमोमन में आप समुद्र में जाता था, एंड इट यूज्ड टू डू डिस्ट्रक्शन टू आवर सी mammals or fishes or whatever. So that is to be controlled. अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, तो आप कंस्ट्रक्शन को रोक नहीं सकते हो. आज अगर आप देखें तो सीलिंग के काम भी काम चल रहा है. उससे भी अगर आप देखो तो पर्यावरण के स्थिति परिस्थिति को बड़ा फर्क पड़ता है. बट वी कांट फॉर एनवायरमेंट, वी कांट स्टॉप द डेवलपमेंट.
You see, but the people are very आजकल आप ग्रांटेड नहीं ले सकते. अभी आपने आरे का ही विषय देखा होगा आपने. So लोग सतर्क है. जहाँ इस ये नहीं कि आपका जो प्रोग्रेस का काम है चलते रहे. एट द सेम टाइम जो पर्यावरण से संबंधित विषय, अभी आपने कहीं एक पर्टिकुलर स्पॉट में आपने कहीं कुछ झाड़ अगर कुछ डिस्ट्रक्शन करना पड़ा इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सिटी. You can't be staying in the desert anyways. So and in return of that, you've done a parallel, like if you removed about 5,000 trees and you planted 10,000 trees somewhere. So you have to have a balance of nature in some way, and which is why that's also equally important, and this is also important. You know. All right. Thank you. Actually, if I may, if you needed to give a reference to Elon Musk, then the reference you should give is to the work that he's doing, through electric vehicles, through their entire process. Yes. And that is a lot more going to make a contribution to the environment in terms of preventing the use of fossil fuel, etc. And since you asked the question, it's the little technology geek in me will give you a 30-second response to it. So, see, come back to the theme of only one Earth. About 15 years ago, humanity discovered through something called as the Hubble telescope that there are, the universe as we know it is 73 billion light years away. Okay, so 73, if you were to see one side of the universe, it's 73, it'll take 73 billion years at the speed of light for something to come and reach where we are. In all of this, how precious can it be that in billions and billions of stars, not just in our little galaxy, we haven't been able to find the kind of life form. That, if more than anything else, comes back to this cause that only one Earth is so precious and why we should be saving it. रेट एट वे जिस तरह से हम अपने अर्थ को यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मार्स तो रेडी हो जाना चाहिए. ये वहाँ तो जाने का कुछ सेकेंड बैकअप प्लान हो. Plan B. But no planet B. All right, thank you. Thank you so much for that question. Anyone else? Yes. Neeraj sir, what made you to be associated with this initiative and about Bhamala Foundation, and how important is for the entertainment fraternity to get associated with this kind of initiative? So, actually, my association with this, with the broader environment started, I think about 12 years ago. My daughter was 5 at that point in time, and I was leaving home, and she was coming with us. And the fan in my room was still on. And I walked ahead, and she reminded me and came back and said, "No, you haven't switched off the fan." She must have been taught that in her school, and that made me ponder. From there, that same year, we initiated within the Creative Media and Advertising Fraternity, a body which I've been associated with, which is called the International Advertising Association. And there we created something called as the Olive Crown Awards, the IA Olive Crown Awards. We just concluded the 12th year of that. In fact, Bhamala Foundation actually won an award on that. That's the only award of its kind which recognizes creativity towards encouraging corporates to disseminate the information of sustainability in a greener planet in this. So I've been, in my own little small way, doing it. To your point about the entertainment industry, see, the entertainment industry is the world's biggest, most powerful platform to communicate. Because, and when you do that communication in music, it has an even more impactful. So that led to a whole separate partnership with Swanand, with Shan, with Bhamala Foundation, and as I mentioned, on last count, I believe 48 people from the industry over the last 4 years, 5 years have been associated with us, apart from the wonderful people here or who are on stage. So I think in our own little way, if we can get that message across, encourage audiences from various levels to take that small action is all that is required at this point in time. तुलसी, मेरा सवाल आपसे. Yeah, right, Joe. मैम, हमने काफ़ी बार देखा है आपको गाना करते हुए. टी सीरीज़ की मैं बात करूँ, काफ़ी बार देखा है गाना.
बट ये सॉन्ग आपके लिए कितना स्पेशल था मैम? आई थिंक ये मेरा नहीं, ये हमारा गाना है और ये इट्स फॉर मदर अर्थ। मेरे लिए बहुत एक स्पेशल इनिशिएटिव है, जैसे कि मैंने बताया बहुत तरीके के बहुत किस्म के गाने गाती हूँ, बट ये गाना जब नीरज सर का कॉल आया कि यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस, तो आई डेंट इवन टेक 1 मिनट, मतलब मुझे ये करना ही था। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड कि मुझे ये मौका मिला है ऐसे कॉज के साथ जुड़ने का। एंड आई जस्ट होप कि हमने जो कोशिश की है वी कैन मेक अ डिफरेंस, क्योंकि इस पूरे जो ओनली वन अर्थ का पूरा कैंपेन है उसका मेन मोटिव यही है कि वी हैव टू सेव आवर प्लैनेट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, एंड आई एम वेरी proud to be associated with it. Thank you so much. Hello, sir. My question is to Mr. Bamna here. Yes, sir. Yeah. Sir, around 4 years back, there was a campaign which started to ban single-use plastics. But though that campaign was not sustained, and still we see plastic use and plastic wastage too much. So how to make these initiatives sustainable so that they continue, because easily it is available in the markets and everywhere. So it is a huge threat to the environment, these plastics. So what initiatives would you be taking for those? You rightly said, it started off with a very big movement, the plastic ban. In fact, after this whole campaign took on, and then obviously it was unveiled in Delhi, so the optics happened here also. The state government of Maharashtra was the first to also ban it off, and then it was to the extent that the vendors, the shopkeepers were fined, because again we all know that plastic in the sea, it remains for 500 years. You know, we have it affects in such a bad manner that we, our sea mammals, the fishes, it has a vast impact. So for that, there was a very serious movement. But फिर से ये जब pandemic शुरू हुआ, अगर आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल में, तो फिर से जो है plastic has, started the usage of that. Now again, in that plastic also, there is a grade of plastic which is usable, and there is a certain degradation of that which is indeed harmful. So that is again a very technical aspect to this, but certainly I'll agree with you that it started off with a great moment, and now it's openly, like अभी पहले अभी हम बात करते थे पिछले ज़माने में, मुझे याद है हमारे मदर और फादर used to go with a cloth bag, पहले के ज़माने में तब ये प्लास्टिक तो था ही नहीं, और तब मतलब पर्यावरण का भी परिस्थिति was not as bad, you see. So, but with times this is happening, and I'm sure there is. I'd like to add one thing on this, that more than governmental laws, I believe that it's personal conscious changes that we all must make. Even if the plastic is available, it's your own choice whether to use it or no. So small conscious changes like being vegan, protecting the environment, using lesser plastic, turning off the electricity, all these small things will make a huge impact. You might not even realize it, how big of an impact it is. So just try reducing your carbon footprint, and the government is doing their job as it is. So, I mean, yeah. Yeah, we can always not point out at the governments and the systems. We ourselves have to intervene and to change in our ways of, in our habits also. That also is basically with us. I mean, there are places where you go and you say, okay, I'm not going to subscribe to buying things from here if you only do it in plastic. But I know at times it becomes very unavoidable also. I mean, at times it's a very big challenge. But as I said, these are issues which at the government level has to be handled very seriously. And like Seher mentioned, that it has to be on us also. We also have to introspect and see that we make a change more than anybody else, and it's time for action. Wonderful. Thank you. Thank you once again to all the wonderful people who have joined us here. And all I can say is we can make that one change. Who want to ask? Okay, we have one more question. All right. Hello. Yeah. Good evening, everyone. My name is Siddesh. My question is to Neeraj sir. Sir, don't you think that along with
people, the government, the municipal corporation is equally responsible in harming the nature. Like we have multiple protests going on. In Mumbai, if you see the recently Powai Lake protest, or in Navi Mumbai side, the protest related to airport or the golf course. So, sir, like why should we always protest the government, and उसके ऊपर सर solution मिल रहा है, जैसे अभी पवई लेक में the court has ordered to scrap that project, right? So it was not necessary. तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हर चीज़ का मुझे जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उतना इल्म नहीं है, बट आई एम सर्टन जितना मैं बता सकता हूँ इन माई ओन लिटिल स्मॉल कैपेसिटी लास्ट 12 साल से whatever I have been associated with the environment, that आप अगर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और BMC की बात कर रहे हैं, in my mind the work that's happening in Maharashtra in comparison to all states is one of the finest. So in reality, if we are still finding a gap, that means there is scope of, there's always going to be scope for more. जैसे मैंने बिगनिंग में बोला, आपको मालूम है जब सबसे बड़ी ये समिट हुई लास्ट ग्लासगो में, और अब सितंबर में शर्म शेख इजिप्ट में होने वाली है, इसमें द इनएक्शन of some of the largest countries has been one of the most, because they have also been one of the biggest polluters. लेकिन ये जो हम लोग कर रहे हैं इस गीत के माध्यम से एक सिंपल मैसेज दे रहे हैं एक आम इंसान को कि आप जस्ट इस चीज़ के बारे में भी सोचें। और मीडिया से आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग इतनी चीज़ें कवर करते हैं, इस चीज़ पे भी ये एक दिन के लिए ना करें। अगर आप सोचिए महीने में अगर एक बार आप लोगों ने इसी चीज़ के बारे में अपने कवरेज में एक रेफरेंस दी, that again is going to add and create this. But I can assure you that the work that's happening both by BMC as well as the government of Maharashtra is actually spectacular in contrast to several other places right now. There's one last question. We're going to take one last question, please. Sorry, we've got a question there. I'm really sorry, but this is going to be the last question. He's already taken one question, I think. So he's already asked one question. Okay, yeah. आसिफ भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं. I would congratulate each and everyone for contributing to only one earth के लिए. मैं सभी से जानना चाहूँगा कि आप ऐसा कौन सा छोटा ऐसा काम करते हो ना, हर एक जन अपने अपने तरह से, जैसे नीरज जी ने और सबने बताया कि सेव हम लाइट बंद कर देते हैं, कोई ट्री प्लांटेशन करता है आप जो, तो इन ईच एंड आप छोटे एफर्ट्स अपनी तरफ से क्या डालते हो, और वन सिंगल लाइन मैसेज लाइक फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, यू बीइंग अ सेलिब्रिटी. हाँ जी. रिसेंटली मैंने घर बनाया नया, और मैं वहाँ पे मेरे घर के बाहर भी, जो कि मेरा एरिया नहीं है, मेरे घर के साथ में पब्लिक पार्क है बिल्कुल, मैंने उसमें 4 पेड़ लगाए हैं. ठीक है, सामने घर के लगाए हैं, अंदर घर के. इफ़ यू विल सी इतनी ग्रीनरी मैंने करी है, बिकॉज मेरे को ये नहीं कि मेरे को शौक़ है, बट ये चीज़ें हमें बहुत हवा देती हैं, अच्छी सोच भी देती हैं, अच्छा काम करने के लिए आपको पॉजिटिविटी देती हैं. तो ये हम करते हैं, और किसी ने हर एक ने अपने घर में कुछ ना कुछ ऐसे करते ही होंगे, और करना भी चाहिए. सर एक मैसेज भी हम आप सभी लोगों से चाहें. यही बोलूँगा, सबको यही बोलूँगा कि आप सभी को हमारे इस एनवायरनमेंट को और हमारे इस देश को इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जितने मैं तो हमेशा लोगों को कहता पेड़ लगाओ, और ऐसी चीज़ों से जो पोल्यूशन फैलाती हैं चीज़ें, इन चीज़ों से हम बच नहीं सकते हैं, बट कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं. हम स्टॉप नहीं कभी किसी को कर सकते, क्योंकि हर इंसान के अपने अपने सोच है, अपने अपने उन्होंने काम करने हैं. बट हम ये हैं कि किसी को बोल सकते हैं तो वो करें तो बहुत अच्छा है. I have a question for Warda.
Oh, sorry. आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़, जैसे हमारे घर में हमने टब नहीं रखा है कहीं, क्योंकि आप टब रखते हो तो उतना पानी यूज़ होता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि नीरज वाज सेइंग, उनकी 5 साल की बेटी ने बोला, दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग, हमको बस लाइट बंद करनी है, गाड़ियाँ चलती नहीं छोड़नी है, पानी कम यूज़ करना है। और क्या था, या एज अ फैशनिस्टा, जो मुझे लगता है कि मैं हूँ, मैं अपने कपड़े रिपीट करती हूँ। ये नहीं कि आपने एक बार पहन लिया फिर खलास, अभी उसका टाइम आने वाला नहीं है। सो यू नो लिटिल एफर्ट्स कैन रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। प्लस जब हम फिल्म बनाते हैं तो वी मेक श्योर कि हम पेपर कम यूज़ करें। अहमद इज़ अ विटनेस टू दैट। Yeah, less plastic, and we take care of a lot of things. Carbon footprint का हम ध्यान रखते हैं, sustainability रखते हैं, green film making पे ध्यान रखते हैं. But yes, अपने लेवल पे जैसे कि हम दाढ़ी बना रहे होते हैं, I mean आप, not मैं, तो पानी को लग छोड़ दिया तो नल बंद करें, छोटी छोटी चीज़ें, लाइटें बंद करें. This will make a huge, yes. Now, this is a new revolution, you know, to have the EV vehicles now, you know. So we must subscribe to using EV vehicles. My volunteers have always started. Inder has bought he's bought the first electric vehicle in our group. So that is also a commendable thing, you know. We want to ensure that there's lesser to carbon footprint. So everyone has to make a difference, and we all together can certainly do small steps which can definitely make a lot of difference. So I thank you all. Thank you very much. And I think we should conclude this. Thank you so once much. again. Thank and you, एक बार everybody. फिर से remember, this is our world, this is our earth, and it is only one earth. Hashtag. Thank you. Hashtag one earth. Thank you, everyone. Please enjoy the song, the complete song on Hangama Music. Ladies and gentlemen, thank you very much for being a part of this event. My name is Urmin. Have a good evening.